So let's start with my dear, the next video is to discuss dimensions of some more physical quantity. And apart from that, my dear, I have given the definition question that define dimensions of physical quantities. Because till now I have not defined the dimensions. I have told that how to find the dimensions. And here I have taken 10 derived physical quantity you can see on the board. Beginning with area till pressure, I solved everything. And this is the final answer of their dimensions. You can see on the board. This is what I am saying, my dear. My student from today onward should remember these 10 answers very well. Any teacher, any people will ask you the dimension for any quantity among these 10. You should tell immediately the final answer. So my dear, let's hear, my question is define dimensions. Now my dear, here you can see area is the derived quantity and length here, the answer is L power 2. Length is a fundamental quantity, right? So how will define this? What I can say, sir, you have written the dimension of area as L power 2, where area is the derived quantity and L was a fundamental quantity, and on that fundamental quantity the power is raised. How many power is raised? Power 2 is raised. Look at the next. Babu, why I am saying this? Because with this help you will come to know the definition of dimension. So I can say here, to get the derived physical quantity area, try to understand. To get the derived physical quantity area, the power is raised on the fundamental quantity. The power which is raised on which quantity? Fundamental quantity. Am I clear? And this power which is raising on fundamental quantity, which give me what? Derived quantity, and name of that derived quantity is area. Similarly, my dear, in any example, on this left hand side it is a derived quantity. Whereas on the right hand side, I have written this derived quantity in terms of fundamental quantity. Length, mass, time, length, mass, time, length, mass, time, length, mass, time. You can see all these derived quantity are written in terms of fundamental quantity. And what are that fundamental quantity? Length, mass, time. And these are the method of writing dimensions. So what is dimension, my dear? Here you can see the powers, the powers, the powers, the power. These are the powers to which fundamental quantities are raised. Length is a fundamental quantity. In case of density, length is raised by power how much? -3. Mass raised with the power of 1. Time raised with the power of 0. और ये सब पूरा एक साथ मैंने लिख दिया. So I got the quantity and the name of that quantity is density, which is derived quantity. तो साइंस ने बेटा डायमेंशंस कैसे डिफाइन किया है? Look at any example. The power to which the powers to which fundamental quantities are raised. Length, mass, time are raised. R-A-I-S-E-D, raised. In order to get, ये काम मैंने क्यों किया है? In order to get the derived physical quantity. In order to get the derived physical quantity. Similarly, look at any example here. Acceleration के केस में या कोई भी केस बेटा, the power here L power 1, M power 0, T power -1. When I raise this power on which quantity? On fundamental quantity. After that, what I am getting by writing this way? Sir, you are getting a derived quantity, that is velocity. So every time, my dear, you make me assure that you got the definition of dimension. From here you can see the power to which fundamental quantities are raised in order to get derived physical quantity are called dimensions. वापस से देखो 9th वाला एग्जांपल. The powers, you can see the powers, right? These powers to which who are raised? Fundamental quantities are raised. Why you did this? To get derived quantity, and the derived quantity name is power. Next, the powers. Here you can see the power to which fundamental quantities are raised
In order to get which quantity? Derived physical quantity. What is the name of this derived physical quantity? Work. So my dear, every derived physical quantity are obtained by raising the power on which quantity? On the fundamental quantity. So what is the definition, my dear? Here I can write the powers to which fundamental quantities are raised in order to get derived physical quantity, in order to get derived physical quantities are called dimension. And here I can give an example. Dimension of force. It is which quantity? Derived physical quantity. And what is the dimension of force? L1, M1, T minus 2. These are which quantity? Length, mass, time. They are fundamental quantity. And these are what? They are powers. So kitna easy hai? The powers. These are the powers. Now you match. The powers. These are the powers. To which quantity are raised? Fundamental quantities are raised. L, M, T. Who are they? They are fundamental quantity. So the powers to which fundamental quantities are raised in order to get which quantity, my dear? In order to get derived physical quantity, and that derived physical quantity here in the example is force, and this is called the dimensions. I hope it is clear. Now my dear, let's go for the some more physical quantities dimension. I have defined dimensions on the basis of, with the help of this 10 dimensions, and they are. So my dear, now let's go for some more physical quantities dimensions, because I have finished with the definition of dimensions. So now what is the, my dear, the next dimension which I supposed to do? Say I have taken plane angle, because you all know that plane angle is a physical quantity, supplementary physical quantity. So let us check it out whether this has a dimension. So my dear, the plane angle is denoted by d theta. And if you remember the formula, it is ds divided by r. What is ds? ds was length of an arc divided by length of radius. This is the formula, if you remember from my earlier video. My dear, what is happening here? Length of an arc. Forget arc. What is the quantity here? Length. So in numerator, the dimension will be L power 1. Because only one length of an arc, it is not length ka square. And in denominator also it is length of radius. Forget radius here, it is length. So again, it is length L power 1. So what is the dimension for d theta? That is dimension of d theta, that is dimension of plane angle will be, what is the answer, my dear? L power 1 minus 1. This is 1, this is 1, and answer will be L power 0. So L power 0, no mass, M power 0, even T power 0. Because length bhi 0 ho gaya, mass or time hai nahi. Thus, plane angle is a dimensionless quantity. Dimensionless quantity. Why? Because it is the ratio of
two same quantities. So simple. Why it is dimensionless? Why it is dimensionless? Because it is the ratio of two same quantity. ऊपर भी लेंथ, न्यूमरेटर में भी लेंथ और डिनोमिनेटर में भी लेंथ. जब मैं सॉल्व किया तो लेंथ का पावर 0 हो गया, मास और टाइम पहले से नहीं है, एवरीथिंग 0, L0, M0, T0, डायमेंशनलेस. बट माय डियर, इसके पास यूनिट है. दो इट possess, दो THOGUH, दो इट possess unit as radian. You all know. Though it possess unit as radian. My dear, this is a fabulous question. Generally होता क्या है, please listen this video carefully. Generally होता क्या है कि जितने physical quantity के पास dimensions होते हैं, उनके पास unit भी होता है. जितने फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन होते हैं, डायमेंशंस, अगर डायमेंशंस में किसी का भी पावर 1 है एटलीस्ट, तो उसके पास यूनिट भी होगा. से आई सेड L पावर 1 डायमेंशन है तो उसका यूनिट मीटर डेफिनेटली होगा. से आई हैव सेड मास का पावर 1 है तो डेफिनेटली उसके पास किलोग्राम का पावर 1 यूनिट होगा. से आई हैव सेड T पावर -3 है सो उसके पास सेकंड का पावर -3 का यूनिट होगा, बिकॉज T स्टैंड फॉर टाइम, टाइम का यूनिट इज सेकंड, सेकंड पावर -3 होगा. बट माय डियर, यहां देखो, यहां पर L के पावर में 0 है, M के पावर में 0 है, T के पावर में 0 है, मतलब ना मीटर है, ना किलोग्राम है, ना सेकंड है. उसके बावजूद एंगल के पास एक यूनिट है और वो यूनिट है रेडियन. तो बाबू, हम लोग फिजिक्स में वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू दैट विच आर दैट फिजिकल क्वांटिटी, नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी, नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेस यूनिट. जनरली होता क्या है, जिसके पास डायमेंशन होता है उसके पास यूनिट होता है. एम आई क्लियर? बट यहां पर क्या है, यूनिट है बट क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है. So we ask this question कि name that physical quantity which possess unit but don't possess dimension, and that is one of the quantity named as plane angle, my dear. So I hope you all clear with this. And now second quantity is solid angle. Take solid angle. पहले मैं आपको वो सारे क्वांटिटी सिखा रहा हूं जो आपने पढ़ लिया है. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय माय डियर d ओमेगा. इफ यू रिमेंबर d ओमेगा और डी ओम भी बोल सकते हैं ना, ओम का भी सिंबल ऐसा ही था, बट बेटर है यू विल से डी ओमेगा, राइट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? dA अपॉन r स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर, dA अपॉन r स्क्वायर, दैट इज एरिया इंटरसेप्टेड ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय area intercepted of sphere divided by square of radius. है ना, यही फॉर्मूला है. We have done this. आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हो. Area intercepted of sphere and divide by square of radius. Now my dear, let us solve this. So the dimension of d omega, that is dimension of solid angle, opening box bracket, closing box bracket, एरिया इंटरसेप्टेड ऑफ स्फीयर. एरिया ऑफ स्फीयर बच्चे को मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटरसेप्टेड ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस आर स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ रेडियस मतलब आर स्क्वायर. नाउ माय डियर, यू कैन सी हियर वन नोट. This can be written as 4 into 22/7, because pi का वैल्यू क्लास 10th everybody know pi value is 22/7, जिसको अब हम लोग 3.14 बोलते हैं. So this 22/7 will replace by 3.14 because the value of pi is 3.14 into this is r square upon r square. My dear, here one important point to note. My dear, 4 is a number.
and 3.14 is also a number, and number is called constant because जो number होते हैं they are constants, and constants मतलब numbers जो हैं, जो number constants हैं, they don't have dimensions. अब 4 का क्या डायमेंशन होगा, 3 का क्या डायमेंशन होगा, 6 का क्या डायमेंशन होगा, नंबर का कोई डायमेंशन होगा? फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है. सो हियर द आंसर इज सिंस numbers are constant, hence they are dimensionless. तो अब डायमेंशन ऑफ डी ओमेगा सॉलिड एंगल क्या बचा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, बिकॉज नंबर तो डायमेंशंस का होता ही नहीं है, नंबर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने नंबर को हटा दिया, मैं तो डायमेंशन ले रहा हूं. जब मैं फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लेता हूं तो नंबर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे और नंबर को इग्नोर कर देना है, बिकॉज नंबर के पास डायमेंशन नहीं होता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा. यानी वो रहने के बावजूद भी मैं उसको लिखूंगा नहीं, बिकॉज व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस स्टेप? Dimension of solid angle is nothing but dimension of r square divided by dimension of r square. Because r is physical quantity, here r is also physical quantity. So I will write only physical quantity, number will be eliminated. बाहर कर दूंगा dimensions के concepts में please कल से ये देखना, dimensions में numbers are ignored. Because we are finding dimensions of physical quantity, not the number. Numbers are constant, they are out, they are eliminated, they are ignored. Ignored is the best word. So now my dear, what will happen? R square मतलब L power 2 divided by R square मतलब L power 2, because मैं पढ़ा चुका हूँ radius मतलब length. So ultimately चौबीसर dimension will be L power 2 minus 2, है ना, 2 minus 2, and answer will be again L power 0. No doubt mass दिखाई नहीं दे रहा है, so m power 0, t power 0. So again my dear, what I observe, thus solid angle is a dimensionless quantity. Why? Because it is the ratio of two same quantity. You can see solve करने के बाद ऊपर भी r स्क्वायर, नीचे भी r स्क्वायर. एक्चुअली सर 4 पाई r स्क्वायर था न्यूमरेटर में, बट 4 पाई नंबर है, 4 into 3.14 एक नंबर है, और नंबर डायमेंशन लेस होता है, तो बचा क्या? खाली क्वांटिटी कौन रह गई? आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सो बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी. एम आई क्लियर? क्वांटिटीज दो it possesses unit as steradian. Though it possesses unit as steradian, यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस है. क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज. So इस तरह my dear, I have named two quantity, दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट तो है, एक के पास रेडियन है, एक के पास स्टेरेडियन है, but they are dimensionless, and I proved it. Why they are dimensionless? Because they are the ratio of same quantities. You can see earlier it was the ratio of length, and next the ratio of length ka square, radius ka square, radius ka square. You can see this. And my dear, so in this topic, what I have tried my level best to teach you some limitations, some rule to be
take care while taking dimensions. And they are nothing but this very important rule. सर नंबर कांस्टेंट्स होते हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उसके डायमेंशंस नहीं होते. दे आर इग्नोर्ड आउट ऑफ द स्टेप के बाहर कर देते हैं while taking डायमेंशन. यहाँ आप देखो मैंने 4 पाई को बाहर कर दिया और खाली क्वांटिटी का डायमेंशन लिया और मालूम पड़ा कि जो सॉलिड एंगल क्वांटिटी है उसका फाइनल आंसर डायमेंशन लेस हो जा रहा है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, दैट इज लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर. अर्लियर ऑल्सो माई डियर, अर्लियर में कोई नंबर नहीं था, सो देयर इज नथिंग टू डिस्कस. बट जहाँ नंबर्स आएंगे वो नंबर्स इमीडिएटली बाहर हो जाएगा. आप ये नेक्स्ट स्टेप्स कल से ये याद रखना कि नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते हैं, खाली फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस होते हैं. दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, मैंने यहाँ पे डायमेंशंस का डेफिनेशन सिखाया है. आप इतने सारे एग्जाम्पल्स से प्लीज़ ये डेफिनेशन मेकआउट करो कि इतने सारे एग्जाम्पल्स में, सारे एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड पे पावर्स है. पावर 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 पावर्स पावर पावर पावर, यू कैन सी पावर्स, एंड दिस पावर्स आर रेज्ड ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी. सो मैंने लिखा है द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड. फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड है ये सारे पावर्स पे, पावर्स के साथ. और ये किस लिए किया है? इन ऑर्डर टू गेट द लेफ्ट हैंड साइड. एंड व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? डिराइव्ड क्वांटिटी. सो माय डियर, द पावर्स टू विच फंडामेंटल, द पावर्स to which fundamental quantities are raised in order to get derived physical quantity are called dimensions. So please make a note of this, and then my dear, I will teach you to take some more dimensions of the physical quantity in your chapter. Thank you बच्चे. Jai Hind from my side.